Hello everyone, good morning to all. This is Sunita, your science teacher. And today class we discuss chapter number 16. Our chapter name is life. We started this chapter in previous classes. First we take the short revision, then after we take a new topic. It is a regular and irregular reflection. Okay. First we take about this topic regarding some uh, revision, then after we just take this topic. Okay, so first we understand about the light is a form of energy. Light is also required to saw anything. हम किसी भी चीज को देखते हैं उसके लिए सबसे आइज तो रिक्वायर है, उसके अलावा क्या चीज रिक्वायर है बेटा? लाइट रिक्वायर है. ओके, देन आफ्टर वी डिस्कस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? the process of sending the light ray back. The process sending the light ray back. This process known as a reflection of light. Here we understand about the what is incident ray. What is incident ray? The ray of light which fall on the mirror. The ray of light which fall on the mirror. And what is reflected ray? The ray of light which sent back after the reflection. ऐसी ray of light जो after reflection वापस back हो जाते, that is called the reflected ray. Okay. Now we move to our second question is I think you all clear about the what is reflection of light. The process sending light and ray back is known as a reflection. Okay, and now next we discuss here two activities are there. उन two activities का जो conclusion था at last हमने जो निकाला था वो क्या था? What is law of reflection? First one is, first activity we understand that the angle of incident and the angle of reflection. So the angle of incidence is equal to the angle of reflection. Angle of incident is equal to angle of reflection. This picture is clear to understand this point. Angle of incident is equal to angle of reflection. Second law of reflection we understand activity 16.2. In this activity we understand that the incident ray and the normal ray at the point of incident and reflected ray all lie in the same plane. तीनों जो ray हैं means incident ray and reflected ray and बिल्कुल center में जो perpendicular line जो normal ray बनाते हैं, all three rays happen in a on the same plane. अगर हम plane change करेंगे means cut किया, हमने fold किया, then we observe, we don't see anything. Okay, so this is a law of reflection. Next point we discuss in our previous class. It is a characteristic of image formed by a plane mirror. एक plane mirror के अंदर जो भी images form होती हैं, what type of images form there? Okay, so images form here. First is the image in a plane mirror is the same as the size of the same. आपकी जो mirror में अपनी image देखते हो वो same size की, same shape की होती है. ठीक है? The image is also a plane mirror is erect. Second point is जो हमेशा image होगी वो हमेशा erect होगी, सीधी होगी. Okay? Third point is the image found in a plane mirror. जो plane mirror में जो image found होती है, it is virtual. We can't obtain on the screen. उसको कभी भी हम screen पे नहीं ले सकते. कभी आप उसकी फोटो नहीं ले सकते हो कि जो image आपको उसमें दिखाई दे रही है उसकी आपने फोटो क्लिक कर ली है. Okay? Next is the image formed in a plane mirror at the same distance behind the mirror as the object in the front of it. और image जो है प्लेन मिरर के जितना फ्रंट में होती है उतना ही बैक साइड में. मे बी हम इस ओ पॉइंट को यहाँ से 2 सेंटीमीटर मानते हैं, तो यहाँ पर जो ये आई पॉइंट है वो भी कितना होगा बेटा? 2 सेंटीमीटर होगा. दैट मीन्स ऑब्जेक्ट जितनी लेंथ पे सेट होगा या जितनी डिस्टेंस पे होगा, इमेज भी मिरर से उतनी ही डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस पे होगी. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज lateral inversion. What is lateral inversion? Here the definition of lateral inversion. Image formed by a mirror is the left of the object appear on the right and right of the appear on the left. This is known as a lateral inversion. This is known as a lateral inversion. Okay, now we move to our today topic, regular and diffuse reflection. In regular and diffuse reflection, first point that we understand here. This first point, understand here what is regular and diffuse reflection. First of all, we understand about the surface. So look at this diagram 16.8. Here is surface is a plane mirror.
ठीक है। तो प्लेन मिरर की सरफेस कैसी होती है, एकदम स्मूथ, बिल्कुल भी रफ नहीं होती, ठीक है। और जो आपके बाहर रोड है या टेबल है, टेबल वैसे हमें बहुत स्मूथ दिखाई देती है, लेकिन अगर हम प्रॉपर लेंस के थ्रू उसको ऑब्जर्व करें तो दिस सरफेस इज अ रफ, उसकी सरफेस कैसी होती है, रफ होती है। तो जैसे ही लाइट्स जो है, पहले मैं रेगुलर रिफ्लेक्शन को क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होगा, इस फिनोमेना के अंदर क्या होता है कि विच पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स, जो ये पैरेलल बीम्स हैं लाइट की, वो स्ट्राइक करेंगी एंड स्ट्राइक करने के बाद में स्मूथ या हाईली पॉलिश सरफेस पर स्ट्राइक करने के बाद में रिफ्लेक्टेड बैक एज अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, बिल्कुल पैरेलल आए, पैरेलल गए, पैरेलल आई और पैरेलल वापस बैक हो गए। दिस इज अ रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। व्हाट इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मींस, yes class, we understand about the regular reflection, now we understand about the diffuse reflection or irregular reflection. Both are the same thing, diffuse reflection and irregular reflection. In irregular reflection the surface is rough. Irregular reflection में क्या होगा, surface कैसी होती है, rough होती है, ठीक है। Parallel beams come and strike the rough surface and come back in a different direction, so different directions में वो move होने start हो जाती है, ठीक है। just like a 16.74 diffuse reflection और irregular reflection की because of ही जो सन की रेज हैं जो बाहर होती है, हमारे घर पूरा चारों तरफ से बंद होता है लेकिन हमारे घर के अंदर भी रोशनी आती है ना, only on diffuse reflection or irregular reflection. Okay, now we move to a new topic, reflected light can be reflected again. क्या कोई रिफ्लेक्टेड लाइट है वो वापस से रिफ्लेक्ट हो सकती है, या एक लाइट जो है सिंगल वन टाइम ही रिफ्लेक्ट होगी? तो आई थिंक यू ऑल नो कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वापस से क्या हो सकती है, रिफ्लेक्ट हो सकती है। जस्ट आप कई बार बार्बर की शॉप पे गए हो, कई बार क्या मंथ में एक बार तो बॉयज तो स्पेशली जाते ही हैं, तो बार्बर की शॉप में आपने हमेशा देखा होगा कि टू पैरेलल मिरर्स आर देयर, है ना। तो एक बिल्कुल फ्रंट में होगा और एक कहाँ पर बैक साइड में मिरर होता है। यहाँ पर मैं आपको एक फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रही हूँ, राइट डाउन, ये आपकी बुक में शोन नहीं किया हुआ है, राइट डाउन दिस फॉर्मूला 360, आप अपनी कॉपी में मेंशन करके रखें, 360 अपॉन बाय 90 डिग्री, 360 ये डिग्री है बेटा, ठीक है, 360 डिग्री अपॉन बाय 90 या एनी एंगल। अभी मैं 90 डिग्री की बात कर रही हूँ तो आई मेंशन हियर 90, अदरवाइज यू मेंशन हियर एनी एंगल, ओके। देन -1, देन -1, दिस इज द फॉर्मूला। व्हाट फॉर्मूला? कि रिफ्लेक्टेड लाइट जो वापस रिफ्लेक्ट होकर हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म, मल्टीपल इमेजेस, जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें हमें ये फॉर्मूला काम आएगा। तो फर्स्ट थिंग इज कि भाई जो बार्बर की शॉप पे जो पैरेलल मिरर्स लगे होते हैं, विच डिग्री, कितना डिग्री उनके अंदर वो जो है आमने सामने है, तो उनमें कितना डिग्री जो है डिस्टेंस होगा। तो आई थिंक कितना होगा बेटा, दोनों के बीच में इन्फिनिटिव कोई एंगल बनता है क्या? नहीं, दैट्स व्हाई इन्फिनिटिव इमेज को आप देखते हैं, मिरर के अंदर एक और इमेज है, मिरर के अंदर एक और इमेज है, इस तरीके की चीज आपने को देखने को मिलती है ना। तो उसमें क्या होता है कि एक्चुअल इतनी सारी जो मल्टीपल इमेजेस हैं, तो जो आमने सामने जो पैरेलल मिरर्स हैं उनमें 0 डिग्री आपका जो है इमेज फॉर्म होती है। तो वो कितना हो जाएगा बेटा, पैरेलल में कितना आ जाएगा, यहाँ 0 डिग्री है, तो पैरेलल में 360 अपॉन बाय 0 डिग्री -1 is equal to a infinitive images, is equal to a infinitive images फॉर्म होंगी, क्योंकि 0 से तो कितनी बारी कट करते रहो, कटता ही जाएगा, तो infinitive images फॉर्म होती है, ठीक है। तो एक रिफ्लेक्टेड लाइट इट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन एंड अगेन, मतलब एक लाइट जब रिफ्लेक्ट हो गई है तो मल्टीपल टाइम्स क्या हो सकती है बेटा, रिफ्लेक्ट हो सकती है, ओके। एंड नेक्स्ट इज मल्टीपल इमेजेस। मल्टीपल इमेजेस के लिए Here is activity 16.2. तो 16.2 में इन्होंने क्या किया, 2 मिरर यूज किए हैं, ओके। इन 2 मिरर्स को 45 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री एंड 180 डिग्री पे प्लेस किया, अलग अलग सिचुएशंस पे, है ना। हम प्लेस कर सकते हैं 2 मिरर्स को 45 डिग्री पे भी, 60 पे भी, 120 एंड 180 पे। So you put this angle in formula, you identify how many images formed in this activity, okay. Suppose you take a 60 degree, आपने 2 मिरर्स के बीच में 60 डिग्री एंगल को प्लेस किया है, तो 360 अपॉन बाय
60 degree minus 1. What answer is this? एक second. Yes, 360 upon by 60 minus 1. 0, 0 cut down. 6, 6 is 36. Answer is 6 minus 1. Our answer is how many images formed? 5 images formed. Okay, here I think it is a 90 degree. Suppose I mention here 90 degree. 9 4s are 36. 4 minus 1 is equal to 4 minus 1 is equal to 3. So how many images formed in the mirror? Counted 1, 2 and 3. It is not a image, it is a object. ऑब्जेक्ट जो भी प्लेस होगा उसकी कितनी इमेजेस बनेंगी? अगर 90 डिग्री पे होगा 3, तो एंगल्स के बेसिस पे जो इमेजेस के नंबर है वो डिफरेंट होते हैं. ठीक है, तो 90 डिग्री है 3, 60 डिग्री है 5. तो यू डू इट योरसेल्फ. 45 एंड 120 एंड 180 डिग्री, हाउ मेनी इमेजेस फॉर्म्ड? ओके, तो यहाँ पर एक चीज और क्लियर हुई. फर्स्ट थिंग क्या क्लियर किया हमने इससे बिफोर टॉपिक में कि एक रिफ्लेक्टेड लाइट अगेन एंड अगेन रिफ्लेक्टेड हो सकती है, तभी तो उसकी इमेजेस इतनी बनती. ठीक है, और इमेजेस मल्टीपल इमेजेस हैं वो 45 पर, 120 पर, 180 पर, हाउ मेनी इमेजेस फॉर्म वी डिस्कस हियर. वी यूज दिस फार्मूला एंड आंसर दिस. ओके, तो आप इस फार्मूले को नोट डाउन कर लीजिए या अपनी बुक में ही मेंशन कर लीजिए मल्टीपल इमेजेस के पास. ठीक है, ओके. तो कल मैं आपसे इसका आंसर पूछूंगी. 45 डिग्री, 120 एंड 180. डू इट योरसेल्फ. ओके, now this idea is Jayantika. Sorry. Okay, now we move to our next point. It is a kaleidoscope. What is kaleidoscope? देखिए जो मल्टीपल इमेजेस है ना, एक चीज और बताना भूल गई. We use a different things here. One second. आपने पेरिस्कोप देखा है, सबमरीन्स देखी है, उनके अंदर हम क्या करते हैं? मल्टीपल इमेजेस चीजों को या रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, इस प्रोसेस को यूज करते हैं. ठीक है, तो पेरिस्कोप किस तरीके की स्ट्रक्चर होती है? पेरिस्कोप में जो ये रिफ्लेक्शन अगेन एंड अगेन हो जाता है, आपने 6th क्लास में देखा होगा. पेरिस्कोप की हमने पिक्चर बनाई थी इस तरीके से, है ना. तो ये मिरर आउटसाइड है, तो यहाँ पर एक मिरर प्लेस होता है, देन यहाँ पर प्लेस होता है ऑब्जर्वर. यहाँ से ऑब्जर्व करेगा और यहाँ से जो भी ऑब्जेक्ट है हम सीन करेंगे. ओके, तो ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन पहले इस मिरर पे बनता है, देन रिफ्लेक्टेड अगेन एंड कम इनटू आवर आईज. वो जो रिफ्लेक्शन की जो लाइट है हमारी आईज तक पहुंचती है. पेरिस्कोप एग्जांपल है. रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन एंड अगेन. ओके, मल्टीपल इमेजेस. आई थिंक you got it my point. Okay, now we move to our next point is kaleidoscope. To make a kaleidoscope, how we make it this? So first of all we require a 3 equal size of mirror, 3 equal size of mirror strip, a sellotape, some colored glass piece, जो बिल्कुल उनको है ना पाउडरी फॉर्म में चेंज किया हुआ. ठीक है, a sheet of stuffed paper and a sheet of gift paper and cardboard etc. ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमने मिरर स्ट्रिप्स लिए है ना, तो फिक्स 3 equal size mirror strip together with a sellotape with the same their shiny side facing inwards. देखिए मिरर में जहां पर रिफ्लेक्शन होता है ना, उसको बिल्कुल मिरर बिटवीन में लेना है, सेंटर में. ठीक है, और जो अनरिफ्लेक्टेड पार्ट है उसको बाहर की तरफ लेना है. ओके, तो हमने क्या किया, मिरर स्ट्रिप को प्लेस कर दिया ट्रायंगल शेप में. ये कितना डिग्री होगा बेटा? आप लोग बता सकते हो? इक्वल एंगल एक ट्रायंगल के बिटवीन में कितने एंगल्स होते हैं? 180. और इक्वल डिस्टेंस से कन्वर्ट करेंगे तो 60 डिग्री. तो मे बी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कैलिडोस्कोप में हम मिरर्स के बीच में कितने डिग्री एंगल को यूज करते हैं? तो आंसर इज 30 डिग्री. आंसर इज सॉरी 60 डिग्री. क्या होगा आंसर? 60 degree. Okay, so our one end of the triangle tube with a cardboard and transparent plastic pouch, fix it firmly sellotape so that the mirror do not fall
down with the help of tube is held vertically. अब इसी ट्यूब को एक अदर ट्यूब के अंदर हमने इस तरीके से look at B डायग्राम फिक्स कर लिया है, ठीक है. Now put it in a colored glass pieces broken, जैसे बैंगल्स के जो पीसेस हैं उनको बिल्कुल क्रश करके आप इसके अंदर प्लेस कर सकते हो. स्ट्रिप पेपर जो कलरफुल गिफ्ट पेपर होता है उसको इसके अंदर प्लेस कर सकते हो. एंड पीप होल एट द सेंटर, और बिल्कुल सेंटर से आपको पीप झांकने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा होल रखना है आपको, और दोनों तरफ से कार्ड शीट की हेल्प से हम इसको फिक्स कर देंगे, बंद कर देंगे. ओके, और जो यहाँ पर पीप होल है जहां से हम पूरी इमेजेस को देखेंगे, ठीक है ना. वी लुक एट हियर इन दिस होल, ठीक है. तो हम जैसे जैसे उसको मूव करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्या कह सकते हैं चेंजिंग या कैलिडोस्कोप के अंदर पैटर्न्स हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो पैटर्न्स हैं वो इजीली विजिबल होते हैं इन कैलिडोस्कोप. आई थिंक आपको कैलिडोस्कोप क्लियर हो गया होगा, ठीक है. अब कैलिडोस्कोप का प्रॉपर्ली यूज किया, योर कैलिडोस्कोप इज रेडी. अगर आप इसको पूरे तरीके से बनाते हो, यू पीप थ्रू द होल, आप उस होल में देखेंगे तो वी विल बी एबल टू सी अ वैरायटी ऑफ पैटर्न इन द ट्यूब. डिफरेंट टाइप की वैरायटी उस ट्यूब में देखते हैं. इंटरेस्टिंग फीचर्स ऑफ अ कैलिडोस्कोप इज दैट we will never see the same pattern again. हम उसको जितनी बार मूव करेंगे हमें एक पैटर्न कभी भी नहीं दिखाई देगा, ठीक है. हर टाइम हमें डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स दिखाई देंगे. डिजाइनर ऑफ वॉलपेपर, फैब्रिक आर्टिस्ट ऑफन यूज कैलिडोस्कोप. ये सब क्या करते हैं, कैलिडोस्कोप का यूज करते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स बनाते हैं और वहां से आइडियाज देते हैं. कैलिडोस्कोप टू गेट आइडिया फॉर अ न्यू पैटर्न. न्यू पैटर्न्स को बनाने के लिए जो कैलिडोस्कोप है वो आइडियाज देता है. टू मेक योर टॉय अट्रैक्टिव यू कैन रैप द कैलिडोस्कोप इन अ कलर्ड पेपर. आप इस कैलिडोस्कोप को कलर्ड पेपर से रैप करके अट्रैक्टिव भी बना सकते हो. तो आई थिंक यू गॉट इट माय पॉइंट. यस, नेक्स्ट पॉइंट इज सनलाइट, व्हाइट और कलर. सनलाइट जो है उसका कलर कैसा होता है, व्हाइट या कलर होता है. तो नॉर्मली वी लर्न दैट द सनलाइट इज रेफर टू अ व्हाइट लाइट. We also learned that it consists of a 7 color. हमने पहले भी देखा है कि जो सनलाइट का जो व्हाइट लाइट है उसमें कितने कलर कंसिस्ट होते हैं, 7 कलर कंसिस्ट होते हैं. Here is another activity showing that sunlight consists of several color. तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अदर पैटर्न्स, सॉरी डिफरेंट कलर्स होते हैं. इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट. Look this video and understand what is dispersion of light. Okay. Of light. In this module, you will learn about the dispersion of light. Sometimes after the rain, we see rainbow in the sky. It looks spectacular, doesn't it? Do you know how a rainbow is formed? A rainbow is formed due to the phenomenon of dispersion of light. To understand what dispersion of light is, let us perform an activity. For the activity, you need a prism, a white sheet and a cardboard with a small hole at its center. Place the cardboard at a position such that the sunlight falls directly on it. Next, keep the prism such that the light passing through the hole of the cardboard falls on the surface of the prism. At the other end of the prism, fix the white sheet as shown. As the sunlight passes through the prism, you will observe a beautiful band of colors appearing on the white sheet. If you look at these colors of the band from the bottom, they are in the order violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. This sequence of colors can be remembered by the acronym VIII. The light coming from the sunlight was white light. Are you wondering from where this beautiful band of colors appeared? Actually, the white light consists of 7 colors, namely violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red, which we saw as the band of colors. When the white light coming from the sunlight falls on the prism, it splits this incident white light into its constituent colors. The splitting occurs because different colors of the sunlight bend through different angles
with respect to the incident ray when they pass through the prism. The red light bends the least, while the violet bends the most. Thus, the rays of each color emerge along different paths and become distinctly visible. Thus, we are able to see the beautiful band of colors. This phenomenon of splitting of white light into its constituent colors through a prism is known as dispersion of light. The band of constituent colors is known as spectrum. This phenomenon was first discovered by Sir Isaac Newton. Now that we have understood what dispersion of light is, let's understand how it causes the formation of a rainbow. A rainbow is generally formed when the sun appears just after it has rained. At this time, many water droplets are present in the air. When the sunlight passes through water droplets in the atmosphere, each water droplet acts like a small prism and refracts the incident sunlight. As soon as the sunlight enters into the prism, that is, the drop, it splits into its constituent 7 colors, VIII, within the drop. When this band strikes the other edge of the drop, it gets reflected internally towards the first edge of the drop. As the band reaches the first edge, it gets refracted again and finally comes out of the raindrop. This band of colors which finally comes out of the raindrop is what we see as rainbow. A rainbow is always formed in the direction opposite to that of the sun. Thus, the appearance of rainbow in the sky is due to the dispersion of sunlight by the water droplets present in the atmosphere. Dispersion of light not only results in the formation of a rainbow, but we can see this effect in our day-to-day life as well. For example, the beautiful band of colors we observe in water fountains, soap bubbles and CDs are all due to dispersion of light. Let's recap. The white light consists of 7 colors, namely violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red, VIII. The phenomenon of splitting of white light into its constituent colors through a prism is known as dispersion of light, and the band of constituent colors is known as spectrum. Formation of a rainbow and beautiful band of colors observed in water fountains, soap bubbles, CDs, etc. are all due to dispersion of light. Okay, class, I think you got at this point. What is dispersion of light? Okay, here is one activity which is explained in this video, and in next class we discuss a new topic. What is inside our eyes? We take in next class. Okay.